So hello everyone, मैं हूँ सब पे भारी आकाश तिवारी and with me it's Mr. IshQ Bector. यो कैसे हो भाई? भाई I'm all good. Finally कर लिया. इतने दिनों से हम लोग प्लान कर रहे हैं, रोज डिले हो रहा है. So like as an artist, how do you earn? Like how does IshQ Bector earns? So I earn as an artist, honestly, stable income comes from rental property, जो मेरे पास है, stable वाला. हाँ. But I keep pitching new songs. Like I've been producing artists. Like I work with a agency called QK Digital Media. वो है A.R. Rahman. Rahman and Yeah. Shekhar Kapoor's Yeah. company. Yeah. So I work with them. They like I do a lot of work with them, branding as far as independent artists producing them. And then another thing is to be an entrepreneur in today's environment. मतलब म्यूजिक के साथ म्यूजिक को अभी इंडस्ट्री ही बदल रही है पूरी. मतलब म्यूजिक फिल्म सब बदल रहा है. मतलब जहाँ पे हम लोग पिक्चरें देखते थे थिएटर में इतना बड़ा, मतलब 1000 लोग एक थिएटर में, अभी तो वो हो ही नहीं सकता. तो अभी पिक्चरें भी डीएसपी ये डिजिटल OTT. स्ट्रीमिंग Yeah. पे आ गए, जस्ट लाइक म्यूजिक या ओटीटीज पे आ गए. तो इट्स लाइक you have to kind of change with the times. So I've done some interesting projects that kind of have that spirit in mind. Ke matlab, um, in that ever changing landscape, that how we can fit in. So you have to kind of figure out how to fit in. And music does pay the bills. Like you can produce other people, you can make your own music as well. But even more than the artistry, kyunki shows bhi nahi ho rahe. So then you have to kind of figure out what the best way is to earn money. Yeah. And why are you standing? बैठ सकते हो तुम like. मतलब मेरा स्टैंडिंग ही सेटअप स्टैंडिंग है, मेरे पास है हाँ. बढ़िया सी कुर्सी है, पर हाँ. इसको मैं यूज कभी मतलब साल में शायद 2-3 बार यूज करता हूँ. मेरा तो स्टैंडिंग डेस्क है, यहाँ पे ऊपर नीचे जाता है. हाँ. यहाँ और फिर और पूरा दिन मैं स्टैंडिंग इस पे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी इस पे खड़ा रहता हूँ ताकि मेरा बैलेंस तो ऐसा क्यों? मेरी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ओके क्योंकि एक्चुअली मैं बैठा था बहुत देर के लिए. Okay. और फिर मेरी मेरी बैक, लाइक आई स्टार्टेड टू हैव इश्यूज विद माय बैक. सो देन आई वाज लाइक दिस सिटिंग इज नॉट गुड. और ये तो मतलब शायद 3-5 साल पहले था. तो उसी वक्त मैंने स्टैंडिंग डेस्क ले लिया, और उसके बाद मैं कभी वापस मैं बैठा ही नहीं. मतलब मेरा काम वैसे ही खड़ा खड़ा रहता है. I'm always standing, क्योंकि इसमें फ्रीडम भी मिलती है. You can step away, you can do your thing, you can move, you can stretch. और and then I was realizing कि खड़े खड़े I was hip, like एक साइड हम ऐसे खड़े रहते हैं वो सब. तो इसके लिए I got the standing piece जो that makes me stand with my center of gravity in place. और फिर ऐसे काम करता. Oh shit. Damn. ये कुछ नया मिला सीखने को. Nice. I just want to ask you one thing, like dirty ishq, ठीक है? फुल कपड़ा वपड़ा पहन लिया dirty ishq का, and I like so मैं ऐसा बाकी लोग जैसा कुछ ऐसा ये नहीं बोलना ना, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करने वाला, ऐसा कुछ बोलने नहीं वाला. Like personally I liked it. I just want to know कि like हर किसी ने वो चीज किया है. पहले हनी सिंह भी कर चुका है. And you know those type of songs. पहले एक फाड़ू करके भी था, like काश कोई मिल जाए, ऐसे टाइप के songs. And like लॉट ऑफ योर सॉन्ग्स लाइक डर्टी, उसमें से कुछ सारे लीक भी हो चुके थे. बट आई वांट टू नो. हाँ, उसमें से कुछ सारे लीक भी हो चुके थे. तो मैंने तो रिलीज होने के पहले वो वाले सॉन्ग सुन चुके थे जब जो वाले लीक हुए थे. बट द थिंग इज कि जो हनी सिंह एंड बाकी लोगों ने किया था, एमीवे, रफ्तार, सबने किया हुआ है वैसे टाइप के सॉन्ग. दे डिड इट इन देयर स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर. ठीक है, अभी उनको वो सब चीजें करते हुए नहीं दिखते. बट यू हैव ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ कमर्शियल एंड लॉट ऑफ वर्क, एंड नाउ यू आर ट्राइंग, एंड नाउ यू हैव पुट अ डर्टी इश्क थिंग. ठीक है. आई जस्ट वांट टू नो कि बहुत सारे लोग वैसा चीज देख के बोलते हैं ना कि यार क्यों कर रहा है, जैसा राज जोन्स ने बोला था कि यार ये क्या हो गया, लाइक ये ऐसा हो गया, मतलब डर्टी इश्क के थिंग के. आई जस्ट वांट टू नो कि स्टिल यू आर एबल टू गेट प्रोजेक्ट्स, मूवी प्रोजेक्ट्स, ब्रांड प्रोजेक्ट्स, जो भी है. सो हाउ वाज दैट पॉसिबल? बिकॉज यूजुअल लोगों को ऐसा हो जाता है कि अरे ये क्या कर रहा है, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद हिम बिकॉज इसमें गाली है या जो भी है. लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दोस थिंग्स स्टिल? पहली बात तो ये है, जब हम एक बड़े ब्रांड को पिच करते हैं तो क्योंकि वो सब जो भी वीडियोस है उसमें गाली नहीं होगा, बट कर देते हैं. तो ये गुड स्ट्रेटजी. या तो वो उन लोग का है.
पर मेरी तरफ से I think I've kind of proven myself as an artist कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, कमर्शियल चीजें भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे थोड़ी फ्रीडम मिल रही है और ऊपर से मेरी मतलब अंदर की रूह की तरफ से I don't give a fuck, right? So if you don't give a fuck, then like you can move and you can be honest and authentic. और मुझे गाने मतलब निकालने हैं जो तुम कहीं और ढूंढ नहीं पाओगे, सिर्फ यहीं पे ही आना पड़ेगा तुमको. So I've always been interested in those types of songs, and I don't find anything is bad or good, or if there's any bad or good language. I personally Yeah. don't feel that there is any bad or good language. It's just how you use it. And if you use it in a creative way, I mean, I don't see a big issue. I actually find it creative and fun. तो और ऐसा भी होता है कि अगर रोज तुम बैठोगे एक साल में, ठीक है, कितने दिन है एक साल में? 350 ना, वैसा 365. कुछ लगभग. 365. या 365 days. Hmm. Okay, ठीक. Hmm. तो 365 days में अगर तुम 200 दिन भी बैठे हो एक नया गाना बनाने में, मतलब जो अक्सर होता है मेरे साथ, लाइक उससे भी ज्यादा, तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पे तुम बोलोगे कि यार मैं आज एक ऐसा गाना बनाऊंगा जो किसी को पसंद ही ना आए, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि किसी को पसंद, मुझे नहीं चाहिए कि कोई खरीदे ये गाना, या मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी को दिखाऊं कि ये मैं आपको बेचना चाहता हूं या ये आपके प्रोजेक्ट के लिए है. मतलब पक जाते हो दूसरे लोगों के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए गाने बनाने, एंड यू जस्ट वांट टू मेक समथिंग दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर एंड मे बी दैट्स समथिंग नोबडी विल लाइक. तो वैसा भी होता है. Yep. तो Agreed. मेरे It's साथ like, होता है. हाँ, like मुझे वही पूछना था because I personally don't have any problems, but you still are able to get deals commercially also. That's a very big thing because usually लोग sideline कर देते हैं, मतलब जैसे you start bringing these things, लोग they have this thing कि हम लोग को और associate मेरे नहीं होना आजू है. बाजू वाले लोग बहुत डरे हुए थे, मतलब बहुत डरते हैं कई बार. मतलब कई गाने मेरे मतलब शायद 10 साल पुराने हैं हाँ. और अभी मतलब बहुत डरे हुए होते हैं कि ये क्यों? डालोगे तो सब मतलब भाग जाएंगे, ब्रांड्स भाग जाएंगे, पब्लिक भी भाग जाएगी, लड़की लोग भाग जाएंगे कि ये कैसा है, सिर्फ लौंडे सुनेंगे तुम्हारा म्यूजिक, वैसा टाइप. हाँ. पर I don't know. I don't think ऐसा है. I think artists should have the freedom to express whatever they feel. Agree. By the way, like जो एक सॉन्ग है वो तो हम लोग खुद दोस्त लोग भी बहुत जैम करते जब हम लोग स्कूल ट्रिप्स एंड ऑल पे जाते, like कौन सा? if you don't like it, yes, smash it. Oh yeah. My love. My love. So yep, crazy था, बहुत बाप था. So like ए हिप हॉपर ने बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया होगा, मुझे वो सेम क्वेश्चन में नहीं घुसना है, बट लाइक ए हिप हॉप बहुत लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं कि ए हिप हॉपर में क्या टीम था, लाइक यू, हनीफ शेख एंड सुनिधि, अमिताभ भट्टाचार्य, तो मतलब लाइक किसी को पता ही नहीं होगा कि हिप हॉपर में. आई एम लाइक चिरंतन भट्ट, अमिताभ हाँ भट्टाचार्य, सोचो dude, बाप लोग थे उस that कंपनी was a में. crazy team, and I just want to know कि like वो टाइम भी बहुत सही था जब ए हिप हॉपर जब सॉन्ग निकला भी था, because if you see the evolution of the industry, वो कैसा था पहले, it's like completely Bollywood songs, then suddenly एक अंग्रेज को आ जाता था, एक दो लाइंस वो कर देता था रैप पे in Bollywood music, and but still the Bollywood character would be more heavy on that guy. और उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड सॉन्ग निकल गया, एक guy with an English swag used to come in and rap, and धीरे धीरे अब पूरा रैप हो गया, अभी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं, अब हाँ. पूरा रैप भी हो गया. ओके, दैट वाज एन एवोल्यूशन, एंड व्हेन यू गाइस केम अप विद ए हिप हॉप, इट वाज क्रेजी. लाइक वो मतलब लोग अभी भी डांस परफॉर्मेंसेस करते हैं वो सॉन्ग पे, लोग हाँ, अभी भी, आई मुझे हैव रोज सीन यू मिलते गाइस हैं पुटिंग वीडियोस. आई हैव सीन यू पुटिंग स्टोरीज, अ लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग द थिंग्स, तो अभी भी लोग करते हैं. दैट्स द इम्पैक्ट दैट सॉन्ग हैज क्रिएटेड. ओके, बट इफ आई टेल यू कि अभी 2021 या 2021 के आगे ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है जैसा ए हिप हॉपर ने किया है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट ट्रेंड जो जो क्रिएट कर सकता है वैसा इम्पैक्ट, बिकॉज अब तो रैप कंप्लीटली आ चुका है. हाँ, क्योंकि वो like you said वो आ चुका है. Like I think the thing that was special about that song was मुझे international audience बिल्कुल नहीं चाहिए थी, और मुझे, because I was born and raised in Canada, I wanted to make something that Indian public के लिए कि खुद का हो.
हाँ मतलब खुद का देसी वाला हो। तो वैसे भी जैसे तुमने बोला बहुत लोग अभी वो सब कर चुके हैं और हाँ बहुत बड़े गाने आ चुके हैं, हनी भाई साहब का और बादशाह भाई का, या सब लाइक मतलब बट वो लाइक वही स्टिल वैसा ही। पीपल विल से लाइक अगर मैं ए हिप हॉप और मुझे प्यार तो अगर एक लाइन में बोल दूं तो पीपल विल स्टिल रेजोनेट टू दैट थिंग, ठीक है, दैट इज दैट इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड। आई वाज जस्ट वांट टू नो कि अब वैसा अगर इम्पैक्ट अभी अब क्रिएट करना हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो 10 सकता इयर्स है? तो क्या होगा? So next, I think like people who are doing a good job is like Bantai, Emiway Bantai bhai is doing a good job. या वो अच्छे से कमर्शियल गाने भी देता है, अंडरग्राउंड गाने भी देता है, तो उसका केस स्टडी बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसने क्या किया कि खुद ब खुद मतलब गाने डालते डालते हम्म। और जो भी उसके ऑथेंटिक सेल्फ है वो डालते डालते उसने पब्लिक जमा कर दी. So he's done a really good job. I consider like what he's doing amazing. Everybody like Divine, everybody Fine, they yeah. have label backing though, but they हम्म have label backing. This dude has not like he's his own like label and all that stuff now. हम्म तो जो उसने किया है is I feel the right way to do it. Like just खुद के का music डालते रहो और अगर अगर public जुड़ती है उससे, then that's the way to do it. Um, okay. yeah, that's the only way. The main thing is now I feel like the way to get in is to just release like be consistent with Consistently, releasing. yeah, exactly. Hmm. Consistency is the main thing, and that's also good. It gives the artist time to the ability to explore different sounds, क्योंकि एक artist एक ही गाना पेलते पेलते खुद ही बोर हो जाएगा. मतलब मैं अगर ए हिप हॉपर बनाते जाऊं, मतलब full ए हिप हॉपर में ही घुस जाऊं, like even at that time I made a hip hopper Daku Daddy, then the हाँ next album was Bhoot Chad Gaya Re, हाँ and then like all the way fast forward to like Besharam, and then fast बेशरम. forward to like Gully Hmm. Boy. It's all like, yeah, I've had the opportunity to do different types of songs. Why is that team not getting together again? Like अगर suppose if you guys were able to create such an impact कि 10-15 साल बाद भी वो गाना अभी भी चल रहा है, 10 साल तो हो गया, ठीक है, तो like why isn't the team getting back again and creating such thing like आगे आगे एक ऐसा कुछ I don't impact know. जो और 10 Somebody साल. just sent me a video of Sunidhi performing a hip hopper on stage with a beatboxer. Somebody आज ही भेजा, तो वो Oh post करूंगा कि सुनिधि गा रही है just give me some hip hop और beatboxer उसके साथ beatbox कर रहा है. तो अभी भी मतलब fuck shit. so So part 2 या कुछ नया आ सकता है उन लोगों के साथ सेम टीम अमिताभ भट्टाचार्य आ सुनील. सकता है, पर मेरे लिए मतलब मुझे ऑफर्स मिलते रहते हैं from indie type of artists, हाँ but हाँ I think what I'm going to do is I'm waiting for like a big film so that we can have everybody and we can have the same team. And now with the new team with their new fees, कि वो अभी क्या like अमिताभ भट्टाचार्य क्या लेता है एक गाने का, सुनिधि क्या लेती है, वो सब सब का मतलब अच्छे से हो. I'm हाँ. actually getting ready to sign, like wish me luck. I'm in talks with Dharma कि वो लोग ए हिप हॉपर यूज करना चाहते हैं एज अ डायलॉग इन द नेक्स्ट वरुण धवन एंड विक्की कौशल पिक्चर में. तो विक्की कौशल का एक सीन है और उसमें Oh, डायलॉग के तौर पे यूज करना चाहते हैं. shit. एंड Is this इमेजिन आई ओन exclusive? हिप हॉपर. Yeah, imagine I own hip hopper. Like I have the publishing of hip hopper. So even since back then, मेरे पास मतलब वही सेंस था कि गाना अगर हम बना रहे हैं, तो गाना पब्लिशिंग रहना चाहिए मेरे साथ. Yeah, तो yeah. वो सब उसके लिए, so I'm pretty excited. They've asked for my details. अभी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, so wish me luck कि थोड़ी देर में. और वो डायलॉग के तौर पे, so it's very good क्योंकि वो सिर्फ डायलॉग यूज कर रहे हैं, तो उसके Oh, उसके थ्रू मतलब I don't know, it'll be good. लोगों का रिकॉल वैल्यू आएगा कि oh yep, fuck yep. हाँ. Recall Valorant, but like, why didn't they took the whole song? Like, I just want to know, like, because बहुत I लोग think अभी they ले want रहे to हैं. use it in dialogue. कुछ तो है उन लोग का सीन Script. जो चल रहा Okay, है. okay, और got मेरे it. लिए अच्छा है, मेरे हाँ. लिए बहुत अच्छा है. I But would like, rather how have did you it like keep this. that publishing thing with you? Like, वो time पे like दिमाग में कैसा था ऐसा? So क्योंकि I grew up like with the Wu-Tang Clan and understanding that an indie artist should maintain the rights, and especially if the record company has not paid for the product to be made, they don't deserve the rights. और उन्होंने क्या किया टाइम्स, और वो बहुत चालाक होते हैं रिकॉर्ड वाले. उन्होंने ओके हमने बात की कि तुम लोग को मार्केटिंग राइट्स और प्रमोशन राइट्स दे रहे हैं,
पर वो सब बाकी सब हमारे पास ही रहेगा। तो उन्होंने बोला हाँ 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 ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भेजा एकदम उल्टा उनका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कि ये गाना हमारा हो गया और तुम लाइक मतलब यू गाइस कैन फक ऑफ ये गाना। और फिर luckily we got the lawyer, a good lawyer to go through it and make sure that all of it was correct. And yeah, and that's the best part is that I have the publishing of that song is still monetized on my channel, मेरे चैनल पे आया। तो वो सब चीजें मैंने मतलब I made sure that I had at that time 10 साल पहले I had that independent mindset. Oh, that's crazy, dude. Because वो time पे ऐसा mindset रखना is difficult. Because that time you बहुत just need to मुश्किल था get into that भाई, industry. कुछ भी चलेगा मतलब बहुत मुश्किल था उस वक्त पे, क्योंकि टी सीरीज का भी ऑफर आया था उस गाने के लिए, पर उसी कारण मैंने मना कर दिया, क्योंकि उन लोग को मुझे लग रहा था कि उन लोग को शायद इतनी अहमियत नहीं है इस गाने की, उन लोग को बस ले लेंगे और फेंक देंगे शायद उस वक्त पे, मतलब यू नो हाउ इट अभी इज तक राइट। 3-4 रीमिक्स भी बन गया था उस पे। हाँ हाँ, सो आई डिडंट वांट टू लूज द सॉन्ग एंड Hmm. दे आर लाइक सो बिग कि वो सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि वो है ही मतलब दे आर लाइक नंबर वन, दे आर मैसिव। सो जो भी वो, और वो हिट भी करा देते हैं बहुत चीजें, पर कई चीजें just go under the radar, right? Damn. So like वो टीम शायद वापस आ सकती है, लेट्स होप। गुड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर धर्मा, आई होप सो वो भी अच्छा हो। बट यस, लाइक यू हैव वर्कड विद टी सीरीज आल्सो, लाइक आई थिंक सो विद अनु मलिक, वो वाला जो अगली पगली, आई Yeah, डोंट, yep, that was the song, yeah. right? So you have worked with them, you have done Besharam also, ठीक है? Like, Oh yeah, lots huh? of stuff with Yep. T series on a film, in the film genre. Yeah, I just want to know कि you have worked as a rapper also, you have worked as a music producer and composer also, okay, and you also direct your videos, that's okay. But in the film side, the hits which you have given is like the T series thing that was with Anu Malik, and you've done Besharam, that was your own music. Like, what do you think, what have you learned from those guys? Is that some good things which you learned from them and then you adapted in your thing, or it's completely opposite कि नहीं इतना पसंद नहीं है and that's the reason you focus on yourself? Okay, no, मुझे सब पसंद है जो भी, I'm happy to be I working, think you I'm happy to started be with making rapping, right? You started with rap in the in Bobby Deol movie. नखरे। है ना वही है ना? बरसात, that's where I बरसात started. बरसात, that एकदम was सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा, वो था मेरा पहला yeah, पहला गाना जो रिलीज हुआ yeah, इंडिया में। exactly. और वो इमेजिन वो पिक्चर में what happened back then was like I used to jump on, like I used to go into a club, go to the DJ and be like, yo, I'd love to rap over your stuff, like throw on a beat, and I'd grab the mic और मैं एकदम like बार पे खड़ा होकर I would be rapping। और एक दिन मैं रैप कर रहा था रेड लाइट में, it was like a bar in काला घोड़ा, और वहां पे सलीम भाई आए थे, और मैंने जो आग लगाई उस रात को, सलीम ने मेरा नंबर उसी वक्त ले लिया, मैं तुझको फोन कर रहा हूँ। अगले oh दिन उसने फोन fuck. किया, बोला भाई मैं ये गाने पे काम कर रहा हूँ, इसको जरा देख लो। बॉबी देओल, बिपाशा बासु और उसमें इश वेक्टर, shit, स्टार्ट में ही स्टार्ट मतलब oh shit, यहाँ No, से but मतलब check it out. So then Salim Bhai calls me to the studio. I record the song for him. I moved like at that time. Then I came back to Canada. I think my sister's wedding was happening. तो मैं पूरे summer के लिए मैं Canada में था, और उन्होंने मुझे like the direction team of the movie is like, yo, we want you to fly to South Africa to shoot this video. You have to come shoot the video. I was like, okay, ठीक है. So then they made it happen. I went to South Africa to shoot, and check this out. So we're at the shoot, and nobody knew me. Hip hopper was long away. मतलब hip hopper को मतलब शायद 2-3 साल था, हाँ, 2 साल थे उससे भी ज्यादा था आने आई थिंक में। सो। हाँ, हाँ, it तो was 2005 which you're talking about, I think so। बॉबी देओल मूवी वो टाइम पे था, हाँ but it's सही like 2010-11 I think so, 9 10। yeah. So मैं पहुंचा वहां पे, and and the choreographer, who's Raju Khan, and nobody knew me, right? They were just like, okay, ठीक है, उसने रैप किया, ठीक है, उसको आ जाओ, इसको डीजे बूथ में डाल दो। तो फर्स्ट शॉट मैं दे रहा हूँ डीजे बूथ में, मैं हूँ, मैं ऐसे कैमरा आ रहा है, बॉबी आ रही है, बॉबी आ रहा है, और बिपाशा आ रही है, और मैं डीजे बूथ में ये सब कर रहा हूँ, यो यो यो। और एकदम इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या कर रहे हो तुम,
तो मैंने रोक दिया शूट को और सोचो कि मैं कोई आई एम अ नोबडी. मैंने फुल शूट को रोका. मैंने बोला प्लीज सर आई हैव समथिंग टू से एंड आई वेंट टू द डायरेक्टर who was Sunil Darshan of the movie, who was sitting back. And what happens in movie shoots is the choreographer actually directs the videos, the music videos. So I went to Sunil Darshan ji and I said, sir, I I feel like my potential is being underused. I would like to audition for you right here, right now, to get the fuck out of behind that DJ booth. I don't belong there. I belong there on the stage. And then he's like, okay, TK. So then I auditioned right there on the spot. If and then they're like, oh fuck, हाँ भाई इसको पीछे क्यों रखे हो, इसको आगे रखो, stage पे रखो. And then we proceeded with the shoot. Imagine. Yeah, shit, but that's a pretty bold move because ऐसा लोग थोड़ा ईगो पे भी ले लेते कि यार ये मतलब समझ रहे. एंड दैट टाइम यू डिड दैट, तो मतलब वो बहुत अगेन अ बोल्ड मूव एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. यूजुअली लोग कर लेते हैं. So that's again a pretty bold move. Great, nice, and And it worked out for me. yeah, Like it did work out. Like, and I did it very respectfully. I was like, yo, I really feel like I'm being underutilized. And you guys have brought me here from Canada. So like, let's do something. And let me try. If you like the idea, if you like what I'm doing, then only. So वैसा type था. What did you adapted from those guys? Like because Anu Malik के साथ भी ये किया था, and then again then बेशरम तो I remember बेशरम का title song भी बहुत hit गया था. I don't know like if people know कि you have composed that thing बेशरम का dialogue or not, I don't know, but it was completely crazy जो बना था जिस तरीके से. Like what are the things you adapted, because you came from completely a hip hop background and then you started working in the Bollywood industry जहाँ पे completely अलग music चल रहा था. So what did you adapted and put it in your thing to make it more catchy or something? So हिप हॉपर के बाद मुझे मौका मिला कि मैं कोई भी किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को फोन कर सकता था. और मतलब मैं फोन करता था और बोलता था कि भाई मैं स्टूडियो आ सकता हूँ, मुझे क्रेडिट दो ना दो, पैसा दो ना दो, जो भी जहाँ पे भी मैं घुस सकता हूँ, मैं आई वुड लव टू वर्क विद यू. सो मैं जाता था टू लाइक हिमेश, अनु मलिक, साजिद वाजिद, विशाल शेखर, प्रीतम दा, and I would just like get in where I could fit in. Like if it was programming drums or bass, or if it was writing an English part, or if it was doing vocals, I would just do whatever. And in that time, I absorbed a lot of like the filmy formula of how people compose, how these music directors compose songs, how songs are pitched to producers. वो सब भी बदल चुका है. मतलब 10 साल के अंदर अंदर बहुत बदल चुका है. Like उस जमाने में अन्नू मलिक जी ने वो गाना जो शादी नो वो नहीं कर ले गुना, उसने हारमोनियम पे सुनाया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को. उस वक्त पे वो बैठते थे हारमोनियम के साथ और वो गाना पेश करते थे. इवन द सेम थिंग लाइक म्यूजिक डायरेक्टर्स वुड लाइक इन विशेष फिल्म्स like would go, music director would go with his guitar and sing like 15 songs, and then उसमें से वो देखते थे अगर कुछ दिमाग में बैठ रहा है. आजकल क्या है कि उन लोग को फाइनल रिकॉर्डिंग चाहिए. मतलब जैसे रेडियो पे सुनाई देगा लगभग वो ही चाहिए. So I've learned like the art of the pitch, the art of composing for films, and it's evolved a lot. Like I said, from that harmonium space, like, and then I learned from Himesh bhai used to like send demos like instead of like na la 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 and no lyric, but the track was there. And then afterwards he put naam tera tera, put वो बाद में आता था. मतलब वो सब चीजें देख कर मैं थोड़ा मेरी फॉर्मूला बनी. पर जैसे मैंने अभी बोला, अभी फुल बदल चुका है. 1.5 मिनट का एकदम धांसू ट्रैक चाहिए जो रेडियो पे ऑलरेडी तैयार है, रेडियो पे जाने के लिए. तो वैसा चाहिए लोगों को आजकल. यप. तो भाई यार ये बहुत इंसाइटफुल होने लगा, बिकॉज लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि भाई मुझे एक्चुअली यही जानना है कि अभी एक्चुअल वे मतलब हाउ इंडस्ट्री वर्क्स एंड कैसे अभी ब्लंट चाहिए कि कैसे चलता है चीज़, एंड हाउ डू यू एक्चुअली अप्रोच दीज थिंग्स, लाइक ब्रेक डाउन ऑफ अप्रोच, एंड एज यू सेड पूरा प्रॉपर फाइनल नेक्स्ट टू लाइक फाइनल प्रोडक्ट ही चाहिए. नेक्स्ट टू मतलब अगर उन लोग को आवाज को रिप्लेस बदली करनी है तो वो खुद मतलब गाने में इतना मतलब वो घुस जाए
कि उन लोग को वैसा भी मतलब समझ में आएगा कि ठीक है, यहाँ पे इसकी आवाज आएगी, अरिजीत आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी मतलब they can see themselves that the song is set, and then just take it, like they just have to replace, do a few tweaks, do the paperwork, and then they can get whatever they want. Yeah, agreed. How can one person survive for as long period as you have survived? Because it's been more than a decade, ठीक है, for you to survive, and there are lot. It's very difficult to survive. ऐसा बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये इंडस्ट्री में मतलब survive करना difficult है, और after few years आपका नाम भूल जाते हैं. But you are someone जो अभी तक survive कर रहा है, ठीक है. Like what are the few things which you keep in mind to survive for such a long मैंने period? हिट देने के बाद भी ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पे मेरे पास मतलब बाहर कॉफी जाने के लिए पैसे ही नहीं है, मतलब मेरे पास वैसे दिन देखे हैं, हिट देने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी हो चुका है, मतलब होता था कई बार। और एक ऐसा जमाना था जो लाइक मतलब शायद 1 साल के लिए, जहाँ पे लाइक मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स होता था, फिर कहीं से पेमेंट आती थी, फिर जीरो, क्रेडिट कार्ड मैक्स जीरो, क्रेडिट कार्ड जीरो, लाइक मतलब कभी लाइक मतलब एक्चुअली क्रेडिट कार्ड मैक्स ऐसे बोलना चाहिए, नेगेटिव में हो फिर जीरो पे आते हो, नेगेटिव पे जीरो पे। तो वैसे दिन बहुत देखे हैं। That's like that's artistry, you never know like when you're going to get, and even after doing work कई बार हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी होती है कि you have to chase payments sometimes, उनके पीछे भागना पड़ता है, और अगर तुमने मास्टर दे दिया तो कई बार मतलब बहुत बहुत तड़पाते हैं, बहुत मतलब वो करते हैं, घिसाते हैं पेमेंट्स निकालने के लिए। So it's definitely not easy. I think how I've survived is like the first thing is that I'm consistent in the studio. घर में ओके, काम के पहले मतलब पैसा कमाने से पहले I show consistency in my craft, in my art. So there's step number one. You have a relationship with your art that is above everything else. You know that every day कुछ ना कुछ तुम करोगे, हर दिन। मुझे मतलब कभी ऐसा दिन अभी तक हुआ ही नहीं जहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि यार स्टूडियो मेरा मन नहीं है करने का, वैसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। मतलब वैसे रोज होता है कि ओ टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा अभी, वैसा होता है रोज कि ओ शिट, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो होता है। पर उल्टा कभी नहीं होता है। बेशक मैं लाइक कोई सड़े हुए सीरियल का टाइटल ट्रैक बना रहा हूँ, या मैं कुछ मतलब कोई भी मतलब डिवोशनल भजन टाइप बना रहा हूँ, बच्चों का बना रहा हूँ, हॉरर स्कोर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा फुल अटेंशन रहता है और फुल मतलब एक्साइटमेंट रहती है। तो वो अंदर की एक्साइटमेंट रहती है। फर्स्ट थिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट आई वुड एडवाइज people, youngsters like you, is to cultivate and bring a lot of value and importance to relationships. Because those relationships are what is going to get you work. I'm a shithead in that department because I just love to do my own work. मैं किसी को, मेरे पास इतने friends नहीं हैं, मैं कभी friend वाला हिसाब नहीं रहा है मेरा जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, कि दोस्त लोग को मतलब hey let's go hang out, ड्राइव के लिए चलते हैं, वो वैसा हिसाब है ही नहीं मेरा। तो मेरा थोड़ा वीक हूँ उस डिपार्टमेंट में, मेरी नेटवर्किंग वीक है, इसीलिए तुम देख रहे हो कि क्लब हाउस पे मैं हूँ, क्योंकि वो भी जनवरी में मेरे लॉयर ने मुझे साइन अप किया, और अभी 3 हफ्तों से मैं लगातार यूज कर रहा हूँ। तो कुछ महीनों के लिए मेरे फोन पे था पर मैंने यूज नहीं किया, पर बीवी ने बोला कि यार तुमको नेटवर्किंग पसंद ही नहीं है, तो अभी तुम घर बैठे बैठे नेटवर्क कर सकते हो, तो अभी कुछ मत बोलो, अभी Dude, 4 घंटे अभी। people would be having such a wrong perception about you, because there are two things, because the kind of videos which you make or whatever people think, ऐसा किसी को लगेगा ही नहीं कि when you told me कि भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, then I work out and then I'm completely on studio पूरा time, and then the second thing about the networking also, like the kind of videos you make, ऐसा लगता है कि भाई ये तो like पूरा time he knows a lot of people and ये पूरा time घूमता रहेगा, but ऐसा है ही नहीं, completely opposite. Oh shit. Completely opposite, bro. Completely opposite. So I would like, but I value, like I've maintained some relationships, like my relationship with Kyuki.
is good, so they know like when work comes that isko de do, ye to nipta dega, ye nipta, like they know. And a few other a few other film producers, directors. But relationships is key. Maintain good relationships in the industry. That is very, very, very crucial. I always say this, but I haven't said it to you yet, so I'll say it, that an artist's greatest tool or instrument, an artist's greatest instrument is, do you want to answer that? Can you guess? Is subconscious? For me, it's time. Okay. So in 2 hours, where am I going to be in this composition? In 4 hours, in 6 hours, in 8 hours? I have developed like my own type of formula that mood ho, na ho, writer's block ka kabhi mujhe ehsaas hi nahi hua, writer's block ka. Kyunki like if I have writer's block, then I'll write about writer's block. You know what I mean? Then I'll make a song about writer's block, for fucking out loud. But I think that time is very crucial. Like I've always considered myself a punch clock musician that develop like in ways to kind of nurture this. I have a few ways to nurture this. Like what I do is every year I take 30 days and I make 30 songs. And that's like my dirty 30. And they're just like very basic, but I get the basic production down and the basic composition. Vocal arrangements kya hai or instrument arrangements kya hai. So, and in those 30 days is very tough because like you go through range the first 2-3 days, you're like first 5-6-10 days, you're like big pimping, and then all of a sudden you're like, fuck, I don't want to make the same song again. I want to make things different. I want to make sure that like, you know, I want to explore different things that I don't even do myself, that are not for me, but I want to explore this because through music I connect with somebody else. So I feel like forcing myself to do those 30 songs in 30 days really helps me develop that attitude that whether you're in the mood or not, you have to fucking pump it out. You have to bang out something. Might not be exactly what you're aiming for, but you'll have something. And like by the time, like after you've spent 10,000 hours doing like a craft, you'll like slowly edge towards The mastery. 10,000 hour rule. Shit. I know that. I know that. I've heard. Another person from Netherlands told me about this 10,000 hour rule. And another person from US does this thing. Like jo 30 days ka hai na. There's this Oh, challenge. Like this is world's biggest art challenge. Inktober karke. That is 30 days. You need to draw every day. You need to draw a drawing. And so there you go. there's a There you different go. version of 30 days. And I'm like, वही fuck, वही shit. है वही है भाई Oh, वही है. oh shit. Oh, by the way, how did you crack your productions? Because like your production level is quite crazy, मतलब quality wise. कितना time I लगा don't उसको know. crack करने I don't में? know. I think people just say it's your taste. क्योंकि मैं, I think it's just taste. It's just vibration क्या आता है, और minimal रखो. Minimal और कुछ नयापन क्या है इसमें? Hook क्या है? Okay. Another thing is, what is the hook of the production? Is the hook strong enough in the production itself? Now, the drums have their own hooky thing that's catchy. Bass has something that's catchy. The instrumentation has something that's catchy. And this is even before you put vocals on it. It has to have that hooky thing. And then minimal is what I would say is the best. Minimal and just like hooky. Okay, okay, agreed. काफी minimal way में explain भी किया, but yes. So Ishq, like you have given a lot of interviews, lot of podcasts, live भी बहुत गए हैं, है ना? Lot of people and every day lot of newcomers would have interacted with you. बहुत सारे question answers होते होंगे. Tell me like ऐसे क्या what goes in your mind like है ना कि भाई शिट मुझे इसके बारे में बात करना है बट यार साला कोई पूछता ही नहीं है ये बारे में या ये बारे में कुछ बात ही नहीं करता है कोई मेरे साथ या मतलब जो बारे में मुझे बात करना है ऐसा कभी हुआ है या लाइक दैट इज व्हाट मे बी वन थिंग जो मुझे पूछना चाहता पर नहीं पूछ पाया एनीथिंग I don't know, maybe. सी देयर इज समथिंग बिकॉज़ व्हेन आई आस्क्ड दिस तो देयर वाज अ स्मॉक ऐसा थोड़ा स्माइल आ गया था मतलब कुछ तो है था बट क्या I mean, I don't mind talking about the fact that creators and artists don't have to be confined
to their profession. Like if I'm a music director or music producer, I don't have to be confined to music. I feel the same amount of excitement when I'm cooking food because it's also creating. It's also creation. It's nourishment for my body, and so I feel like it's highly underrated for and and like another thing is like to not like peg yourself as just this one thing. Like I never used to mix and master any of my stuff, but after COVID hit, I've been mixing and mastering all of my, and get all my new stuff that you'll hear is all mixed and mastered by me. Um, and and from that, all the new stuff, all the new songs that you see, all the cover artwork is all me because I've been doing graphic design as well now. So I'm just trying to like get sub. I want to take everyone's job. भाई Like कितना होगा? You are doing कम से कम अभी 8 से 9 जॉब हो गया होगा अभी तो. Like you do direction also. Shit. yes, yeah, वो भी मजबूरी का नाम. Imagine like that's the whole thing. But I enjoy it because it kind of it it extends my palette of creativity where I get to make a song and then I get to direct the video and then even make the artwork that I feel is fitting for the song. It's all like So yeah, मतलब I बेसिकली इश्क वेक्टर को भी लाइक राखी सावंत के बारे में नहीं पूछने से अच्छा कुकिंग या वर्कआउट के बारे में पूछना चाहिए. yeah, totally. Yeah, agreed. So maybe ये कोई सुनेगा तो करेगा. Okay. And is there anything else which I missed, like, or like how did you find this podcast? कैसा लगा? Yeah, it's cool. I'm glad that you're doing it. I hope your audience enjoys, and if your audience wants to find me, I'm pretty easy to find. Especially on Clubhouse is easiest to find me Yes, now. the easiest to find Ish Bector is on Clubhouse because मैं 1 साल से try कर रहा हूँ but हुआ नहीं. I got him on हाँ, मेरा Clubhouse. इंस्टा इंस्टा कई बार मुझे आई डोंट नो वो वाइब ही नहीं आता कि कनेक्शन का कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी से. हम्म. थोड़ा प्रमोशन वाला शॉट लगता है. सब हाँ. प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, सब प्रमोशन कर रहे हैं, पर वो वाला फील ही नहीं आ रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड सेंस. थोड़ा मुझे जो क्लब हाउस में थोड़ा आ रहा है वो वाइब हम्म. कि आम लोगों के विचार जान सकते हो, एक्चुअली बात कर सकते हो लोगों से, तो वो सब मुझे थोड़ा और अपीलिंग लग रहा है फिलहाल. पर उसमें भी मैं अभी थोड़ा बोर हो रहा हूँ. मतलब हाँ. बहुत वो गपशप रूम और वो सब मैं घुसता ही नहीं हूँ अभी. मेरे को तो I just liked your unreleased stuff Instagram live पे and now even on Clubhouse when I actually followed you तब you were playing your unreleased stuff. Starting में बहुत वही fresh था. Yeah. वही होता है. मैं मुझे जैसे गाना रिलीज हो जाता है तो वो सबका हो जाता है, हाँ. तो उसको वापस पेश करने का या सुनाने का मुझे मजा नहीं आता है. I like playing songs that are unreleased, that are like that you can't hear anywhere else, that I'm like playing with you on the spot, and then I also get your honest feedback. Oh, ये गाना आ नहीं रहा है, और उसके because of the fact that it hasn't released, somebody would feel more free to give feedback. Okay, I felt like this, because they know that there's space that I could actually change it, right? But dude, I loved your. There's this one thing which I want to add. मेरे को ना, I love your family part also because when I was going through your story, मतलब जैसे your family said हाँ ठीक है जाने दो करने दो देख ले 6 महीने में खुद भाग के आ जाएगा, but they allowed you to go and experiment जब मुंबई से आया. And even like your wife when I was there, and I was like when I was listening to her on Oh, Clubhouse, she's so supportive. कुछ भी करो मतलब you have this space. ऐसा नहीं कि भाई क्या मत कर रहे हो. oh bro, मतलब okay, ये है एक चीज जो मुझे बोलनी चाहिए. फैमिली का सपोर्ट जब आता है ना, तो everything else doesn't matter to me. Like I was so lucky that when I moved to India to do music, it was very tough for my family, very very tough. पर जैसे मेरे गाने टीवी पे आने लगे, इंटरनेशनल कनाडा में भी आ रहे थे टीवी पे, तो उनको थोड़ा हौसला था कि ओके ठीक है, ही वेंट फॉर म्यूजिक और वो एक्चुअली म्यूजिक कर रहा है. उसको मतलब वो गलत चीजों में नहीं घुसा, वो मतलब जो उसको करना था वो कर रहा है, तो वो शांत हो गया. एंड नाउ विद मैरिज, I've found somebody who is supportive in the way that she understands it. I've spent like 6 hours in the day working on a cover art. Like it's taken me 6 hours to make it, and she's cool with that. But I have my own responsibilities. Like
at home, I take care of everything to do with the house, like whether it's cooking, taking care of the house, paying the bills around the house, भाई getting कैसे all the टाइम मिलता है, cleaning कैसे done टाइम around the मिलता है? house. वो सब तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे 4 बजे होते हैं मेरे यहाँ पे, 4 बजे मैं दुकान बंद, ऊपर जाकर खाना बनाऊं, and then uske baad main wapas aa, like that's regular for me. So there are like the fact that I take care of like my responsibilities, because she has a stable income, uska stable, ekdam stable hai. To wo, that's what happens when an artist marries a professional. The artist, क्योंकि हमारा काम haywire होता है, like पिछले साल मैंने शायद 3 projects किए थे, पर एक तो इतना बड़ा था कि it was the most of my income came from one project. But imagine एक कोविड साल में 3 बार like actual paid gigs कर रहा हूँ, बाकी सब मैं ऐसे ही like studio में खिचड़ी पका रहा हूँ खुद की. So like She's still it's very understanding. important to have somebody who supports, but you also can't have to support like I do. Like I said, I do all the cooking and all the taking care of everything to do with the house. And even on her days off, when she's like, yo, should I make this? I'm like, no, you chill, girl, this is my time to do it, you relax. And she gets like, I don't know, she gets like, I don't know if you see, मैं अभी आजकल वो stories डाल ही नहीं रहा हूँ, but like wifey's brekkie wifey's dinner, मैं सब, I post those stories of stuff that I make. And like, yeah, that's the type of thing. If you're an artist, marry a professional so that you guys can balance each other. Yeah, वो है. But dude, this is amazing. मैंने ऐसा ये वाला side देखा नहीं था. Because the kind of interviews you have given and जो भी मतलब I was just expecting a different side, and this is so beautiful. मतलब बहुत pure side था. मुझे बहुत पसंद आया. I don't know like what was your response, but I loved this podcast. मेरे को बहुत सही लगा. The vibe was beautiful, dude. मतलब crazy. चलो सही है भाई, चलो सही है. I'm Yep. glad. I hope our public को पसंद आए और उन लोग को थोड़ी इंस्पिरेशन मिले कि है, कठिन है रास्ता, तो कठिन है आर्टिस्ट का बहुत ही ज़्यादा. क्योंकि जैसे मैंने कहा, हिट देखकर भी कई बार सब कुछ चले जाता है, मतलब सब कुछ, मतलब फ़ोन बजना ही बंद हो जाता है, कोई तुझको फ़ोन नहीं कर रहा है, तो तुझे खुद अंदर मतलब ढूँढना पड़ता है कि मैं क्या वैल्यू कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, किसको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उसको वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ, और फिर वो सब. Agreed, dude. This was crazy. बहुत बहुत अच्छा था. Candid conversation, and people would learn a lot. Trust me on this.